खिलाने वाली है। उत्तर विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, गुवाहाटी में उपस्थित एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर टी.जी. सीताराम जी, सभी के सम्मुख उद्घाटित करता हूं। ये शुरू हुआ ऐसे घोषणा करता हूं। This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and enlightenment of thought and enlightenment, and begins the mark of Grand Finale 2024 SIH Software Edition at Lovely Professional University. Technology, West Bengal, Kolkata, and the event has already started. It's been open, so it not take much longer. I congratulate all of you, and I thank all the organizers, the chief guests, and all the dignitaries for welcoming us. And it is a worship of technology and innovation, as very correctly reminded to us by the dignitaries. Just one experience. It's my 4th time into the finals, and previously 2018 Bhubaneswar, 2022 ISMIT Dhanbad, 2023 St. Joseph Chennai, and this is 2024 LPU. It's been I have been a mentor, and I have not been into the winning team, but who cares? My PhD, actually I got registered in 2018, had a lot to do. It ignited the spark in me to have the ideation which was adapted from Smart India Hackathon. And every time we are from West Bengal, and I mean in Oscar Wilde, in the Selfish Giant, it is mentioned that it's too cold. The flowery garden was all of hell and storm. And over here in LPU in Punjab, we are finding it very cold. But seeing you guys like Oscar Wilde, the Selfish Giant, found out with the young buddies, at last spring has come. At last here, the smiling faces will make. Yes, at last it's the early spring, early Christmas over here. Sir was talking about the like button in Facebook, how people were smiling at it, grilling at it. When Pradhan Mantri ji, PM Modi ji said that we are into a mission of Atmanirbhar Bharat in India mission. Some of the reporters, I can still remember, said that what is the purpose of Make in India? He said that I want to make India via Make in India. You are the makers of India. Let us celebrate. These days we don't get any calls. In 2018 I can remember I was getting calls from the guardians about their girl childs. They were too reluctant at times, too worried. But these days it's spontaneous, as Dr. Sukanta Mujumdar sir told. Either we win or we learn. As Edison said, very correctly said that I learned in his 1001 first attempt, he actually invented the bulb. And he was asked, how did you feel about failing for 1000 times? He said, no, I learned 1000 ways how not to make a bulb. Let us be the leaders. शुरू करते हैं।
बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत हैं। आप सभी युवा इनोवेटर के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों से देश की नौजवानों के अंदर हायर एजुकेशन दुनिया में जुड़े हुए यंग इनोवेटर्स के बीच में एक नया उत्साह बढ़ रहा है। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की सेवा करना शुरू किए हैं, इनोवेशन को एक प्राथमिकता बनाई है। देश ने आज इनोवेशन को लेके, नवाचार को लेके अपना पराकाष्ठा दिखा दिया। स्टार्टअप की संख्या जब 2014 में सैकड़ों में होती थी, वो आज 1.5 लाख की नंबर तक पहुंच रही है। यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहा है। हमारे देश की नई पीढ़ी It has now acted as a seed, nurturing a dynamic ecosystem that can incubate innovative ideas at their nascent stages and turn them into a fruitful, scalable ventures, paving the way for Viksit Bharat at 2047. मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकाथॉन्स हुए, उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे। हैकाथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए। This year's moments later. रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का।